Hi guys and welcome back to yet another exciting episode of Female Cricket Live। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे कल का मैच जो हुआ था मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच। फिर हम डिस्कस करेंगे आज का मैच का प्रीव्यू और फैंटेसी पिक्स। पहले एक झलक डालते हैं कल के मैच की ओर। मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पेस बॉलर शबनम इस्माइल दोनों एक इंजरी के कारण मैच के बाहर रूल आउट किए गए थे। यूपी की कप्तान एलिसिया हीली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हेली मैथ्यूज के 55 रन्स की इनिंग्स की बदौलत मुंबई इंडियंस ने एक 161 रन्स का डिफेंडेबल स्कोर बोर्ड पर रखा। फील्डिंग करते वक्त इंजरी के कारण वृंदा दिनेश जो यूजुअल ओपनर है यूपी की, वो ओपन नहीं कर पाई इनिंग्स, जिसके चलते किरण नवगिरी को इनिंग्स ओपन करने का मौका मिला। एलिसिया हिली और किरण नवगिरी की पारी की बदौलत यूपी वॉरियर्स ने कल का मैच बड़े आसानी से जीत लिया। किरण नवगिरी को अपने what effect did Harmanpreet and Shabnam Ismail being ruled out like standing captain? So Julie, what would you like to yesterday's match? काफ़ी बड़ा नुकसान हम कहेंगे मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव से। देखिए, कप्तान हरमनप्रीत कौर हालांकि सिर्फ एक निगल कहा गया है, इसके कारण वो नहीं टीम का पार्ट रहे थे, और शबनम इस्माइल आई थिंक उनका भी कोई निगल रिलेटेड ही था, तो ज़्यादा कुछ सीरियस इशू है नहीं मुंबई इंडियंस के खेमे में। तो ये दोनों प्लेयर्स, जैसे कि शार्लेट एडवर्ड्स ने भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त कहा था कि हरमनप्रीत कौर एंड शबनम इस्माइल आई थिंक विल बी अवेलेबल फॉर द सैटरडेज गेम अगेंस्ट आरसीबी, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट लुकिंग एट द मैच दैट हैपेंड येस्टरडे बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड यूपी वॉरियर्स, आई थिंक फ्रॉम अ यूपी पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन उनके लिए। फाइनली वो अपना पॉइंट्स टेबल के अंदर अकाउंट ओपन कर पाए, पहली जीत उनको मिली, और मुंबई इंडियंस जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है उनके सामने एक जीत उन्होंने रजिस्टर करी है, तो बहुत अच्छे साइंस है यूपी के लिए। तो आई थिंक टू बिगिन विद मुंबई ने आई थिंक टॉस हारा और पहले बल्लेबाजी करी, तो आई थिंक आउट ऑफ द कंफर्ट जोन दे वर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस WPL 2024, और हमने देखा कि शायद थोड़े से आई थिंक हेजिटेशंस होंगे कि कितना स्कोर काफ़ी होगा व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट, और वैसे कुछ लगा। हालांकि 161 एक अच्छा टोटल जरूर मुंबई इंडियंस ने पोस्ट करा था, but the way the innings panned out, I think, apart from the opening stand between Haley and Yastika, which lasted for I think 8 overs, they scored 50 odd runs. उसके बाद अगर हमने देखे तो काफी कंफ्यूजन्स भी हो रहे थे। हालांकि वो एनएसबी का रनआउट जरूर हुआ, पर आई थिंक 2-4 रनआउट भी हो सकते थे, जितने वो कंफ्यूजन्स हम देख रहे थे फील्ड के बीच। बट आई थिंक वहाँ पे मुझे सोफी एक्ल्स्टन की तारीफ करनी है, उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था। आई थिंक हेली मैथ्यूज हैड सैक्रिफाइस्ड हर विकेट, पर सोफी एक्ल्स्टन का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, उन्होंने कीपर एंड पे थ्रो करा, क्योंकि आई थिंक वो भी जानते हैं उनकी जो इंग्लैंड टीममेट है, आई थिंक शी कुड हैव बीन फार मोर डिस्ट्रक्टिव देन हेली मैथ्यूज। I think Haley Matthews, she was just finding out ways to get out yesterday. तो हेले मैथ्यूज आई थिंक वो गैस जो था टंकी का, वो आई थिंक वो खत्म हो चुका था उनका, इसीलिए एक्ल्स्टन ने एनएसबी को रन आउट करा वहाँ पे। बट ओवरऑल आई फील यूपी के लिए एक अच्छा दिन रहा था। अंजलि सरवानी, जिसकी हमने कल चर्चा करी थी कि शायद उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, और वैसे ही कुछ हुआ। यूपी वॉरियर्स वेंट अहेड विद अ लेफ्ट आर्म पेसर इन अंजलि सरवानी। उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत करी, पहली ओवर काफी किफायती भी करी उन्होंने, पर उसके बाद ऑफकोर्स थोड़े रन्स उनको पड़े, पर एक विकेट भी उनके नाम आया। तो अंजलि सरवानी, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा खेला नहीं था इंजरी के कारण पिछले कुछ महीने, उनका WPL में उनको दोबारा एक मौका मिला है, और एक अच्छी शुरुआत हमने उनसे देखी। और ग्रेस हैरिस और किरण नवगिरे, आई थिंक उनकी जितनी हम तारीफ करें वो कम होगी। और वृंदा दिनेश को जो शोल्डर इंजरी हुई है, आई थिंक नो डिसरिस्पेक्ट टू वृंदा दिनेश केपेबिलिटी एज अ प्लेयर, बट आई थिंक वो बून इन डिस्गाइज रहा यूपी वॉरियर्स के लिए, क्योंकि एलिसा हीली के साथ उतरे किरण नवगिरे, जो खुद एक ओपनिंग बैटर ही है, और हालांकि वो है महाराष्ट्र से, पर वो नागालैंड के लिए जो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। मेरे ख्याल से वन ऑफ द डोमेस्टिक सीजन्स में उन्होंने 150 से अधिक रन भी बनाए T20 के अंदर, तो वो बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी है। किरण नवगिरे बहुत ही पावरफुल प्लेयर भी है। मैंने उनका इंटरव्यू भी करा था फीमेल क्रिकेट के प्लेटफॉर्म के लिए भी, और उन्होंने तब कहा था कि वो जैवलिन थ्रो भी करते हैं,
तो आई थिंक वही दिखाता है कि उनके शोल्डर्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है और कल वैसे ही कुछ हमने पावर पैक्ड बैटिंग भी देखी किरण नवगिरे से, तो आई थिंक यूपी वॉरियर्स का जो ओपनिंग स्लॉट है वो आई थिंक फिलहाल कंफर्म हो चुका है एलिसा हीली और किरण नवगिरे के रूप में, क्योंकि एक अर्धशतक भी जड़ा किरण ने कल, तो एक अच्छा प्रदर्शन उनसे देखने मिला, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला उनको, और ग्रेस हैरिस का एक अच्छा ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन। तो आई थिंक यूपी वॉरियर्स के लिए एक अच्छा दिन था, बट आई थिंक hopes not to be lost by Mumbai Indians, क्योंकि I'm sure they'll make a comeback. बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि किरण नवगिरे को ऐसे आफ्टर द इनिंग्स ड्यूरिंग द इनिंग्स ब्रेक बताया गया कि शी इज टू ओपन द इनिंग्स, बट एट नो पॉइंट डिड शी लुक आउट ऑफ प्लेस. शी ओन्ड द गेम थ्रू आउट बिफोर शी वाज dismissed. So, Pratik, what are your takes on yesterday's match? How it all panned out? Well, starting off with the innings of Mumbai Indians, we finally saw that Haley Matthews got among the runs, and even though she started off slowly, we could see her express herself and play the shots she usually indulges into. So that was a very good aspect for Mumbai Indians. Although she may have given quite a few chances here and there, which were dropped, or fielders weren't able to see because of the light. Talia Mugrath precisely. But this would give her the much required confidence because she wasn't among the runs, and I'm hopeful that she uses this as a building block and make sure the innings she plays in the tournament forward, she makes it count. And Jessica Bhatia as well gave them a good start. She's had a few good innings coming into this match, and she made it count altogether. And I think that was all for Mumbai Indians innings because a lot of firepower was expected down the order, and a couple of mishaps here and there made sure that they only managed 160 runs. And in retrospect, somewhere I felt that they fell short by a few 15 to 20 runs. Given that the batting order they possess, they could have done much better. And coming to the bowling of UP Warriors, all the bowlers were among the wickets, and that was something good to see all of them pitch in at a time. And yeah, we were finally able to get answers regarding the UP Warriors batting lineup. It was quite unfortunate for Vrinda to miss out because of her shoulder injury, but man, oh man, the way Kiran Navgire started off was just scintillating for me. She had no scoreboard pressure or even the pressure to perform. She was coming into this game without any, higher scores. For her, from a personal perspective, this was a very huge match, and she made it count. Her intention from the beginning was very clear, and that was not to keep it grounded, but to go the aerial route and pierce the gaps or even go over the fence. So that was fantastic for me from Kiran Navgire's side. It was well supported by Alisa Healy as well. She too got off to a good start and caressed a few boundaries in the beginning. So immaculate stuff. And what followed by Grace Harris was again something beautiful to watch. She hasn't been among the runs recently, but yesterday, the way she got off and especially playing down the ground, the drives were very pleasing. And that would be an indication that there is much more in store for her in the coming matches because she looked extremely confident as well. And another plus point for them would be Deepti Sharma, who expressed herself there. And even she stole the limelight with the bat with some very catchy shots. So all in all, a great game for UP Warriors, and I must say they are on track in this tournament, and anything could happen from here onwards. बिल्कुल, जैसा हमने डिस्कस किया कि किरण नवगिरे डोमेस्टिक सर्किट पे ओपन करती है, बट a WPL match and a domestic match cannot be exactly compared, but her confidence was just on the mark. From the word go, the way she attacked the Mumbai Indian bowlers, if I were, not a Mumbai Indian fans, that would be a delight to watch. So, अब आज की मैच की ओर चलते हैं. आज का मैच होगा आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच. आरसीबी टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है, अब तक दोनों मैच जीती है और एक तरह से कहा जा सकता है कि दे आर कमिंग टुगेदर एज अ यूनिट. लाइक इन द पास्ट दे हैव बीन गिल्टी ऑफ बीइंग outstanding individuals,
but haven't played together as a team. But this time it's totally different. एंड दूसरी ओर दिल्ली ने दो मैचेस खेले हैं. पहली मैच में हार का सामना करना पड़ा था, बट दूसरी मैच में काफी बेहतरीन कमबैक किया उन्होंने यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट. सो जूली, आपका क्या कहना है आज के मैच के बारे में? Arguably, I think this is going to be the best match in the league stage of WPL 2024. ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये दोनों टीमें अच्छे फॉर्म में लग रही है. आरसीबी लाइक काफी सरप्राइजिंग शॉकिंग भी है, क्योंकि अगर हम WPL 2023 उनका देखें तो केवल 2 जीत थी उनकी, जैसे कि हमने पिछले डिस्कशंस में भी डिस्कस करा था. पर इस सीजन में 2-2 उनका हो गया और टेबल टॉपर्स है. आई थिंक दे कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर स्टार्ट टू दिस WPL. तो अच्छी शुरुआत उन्होंने करी है. कप्तान स्मृति मांधाना भी अच्छी फॉर्म में है, और बाकी जो प्लेयर्स है, रेणुका सिंह ठाकुर हो, एलिस पेरी हो, मेघना हो, रिचा घोष हो, लाइक देर आर डिफरेंट मैच विनर्स आई फील इन दिस आरसीबी यूनिट. और एज अ यूनिट ये टीम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है. पर इनका अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर हम देखें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, ऑब्वियसली WPL 2023 से कंपैरिजन हम करेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स ने दोनों मैचेस जीते थे आरसीबी के खिलाफ. तो आरसीबी के मन में भी वो स्टैट जरूर होगा जब वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आज खेलने उतरेंगे. बट आई थिंक करंट फॉर्म उनका देखते हुए अच्छा कॉन्टेस्ट हमें जरूर आज होपफुल है आरसीबी और डीसी के बीच. एंड आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू हाईलाइट इज आरसीबी ने जो दोनों मैचेस जीते हैं, आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम आरसीबी, पर जो दोनों मैचेस जीते हैं जीजी के साथ और यूपी वॉरियर्स के साथ, तो आई वुड रेट दीज टू टीम्स रिलेटिवली वीकर देन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स. तो हम कहेंगे कि एक शुरुआत में जब आपको थोड़े इजी ऑपोजिशंस अगर होते हैं, तो आई थिंक वो आरसीबी के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है. और ये दोनों मैचेस में उन्होंने जीता है, तो एक अच्छे साइंस है आरसीबी के लिए. पर इस बार पहली बार एक टफ अपोजिशन उनके सामने होने वाला है, और ऑफकोर्स शनिवार को हम मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी उनका मैच देखेंगे. तो अगर आरसीबी ये दोनों अपोजिशन के खिलाफ भी वैसा ही प्रदर्शन करे, so then we can surely say that RCB are completely in this WPL 2024 and are a good contender to be in the finals. But I think आज का मैच ओवरऑल एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, और मुझे स्पेशली एक मैचअप देखना है, वो होगा मारिजान काप और स्मृति मांधाना के बीच. मारिजान काप जिस फॉर्म में है और स्मृति मांधाना ऑफकोर्स उनका जो रिसेंट 43 रनों की जो पारी थी, ये कॉन्टेस्ट काफी मजा आएगा देखने में. एंड आई थिंक द टीम दैट प्लेज बेटर इज गोइंग टू विन टुडे. बिल्कुल, एक तरह से आरसीबी का लिटमस टेस्ट जो कहते हैं हम, वो होगा आज. एंड डेफिनेटली दे हैव बीटन कंपैरेटिवली वीकर साइड्स, बट देयर इज नो इजी मैच पर से इन द WPL. सो या, ओवर टू यू प्रतीक. Well, yeah. So even though the head-to-head stands 2-0 from the previous edition, but it is true that RCB is unbeaten at the moment in this very season of the WPL. They may have gotten off such starts among weaker oppositions, but in retrospect for them, that was something very essential, because coming that they've been brought forward into this tournament from that kind of a tournament, so it was important for them to get off to a positive start, which they have latched onto the opportunities. But from here on, it is essential for them to realize that it is important to get going and making sure the momentum does not drop from here, because coming into this game, I'm pretty sure they would be riding high on confidence, and maybe would also start off as favorites for me, because they've gotten all the ends covered, be it the Indian talent or the foreign talent out there, the batting and bowling. Everyone has been, culminating their efforts to make sure that, RCB have been doing well. And even at the top, we've seen multiple batters for them standing out in different games, which is a very good sign for a team, because if you rely on only one or two, power-packed batters, it becomes very difficult. And because of which RCB are, they need to be confident, and also their bowling is doing well. The spinners have been stepping in, be it Sophie Molineux or Asha. And mind you, such match-winning bowlers go on to win you big tournaments. So that is a big plus point for the RCB. And the Delhi Capitals might have started off with a loss, but the way they came back in the previous game was a defining statement of the firepower they have gotten inside their team, led by Meg Lanning, an experienced contender. It would be interesting as to what her approach would be, given that
they'd be playing against the RCB at their home ground. So I think it would be an equal battle today because no team is rated higher. We are still at the beginning, and even that Delhi Capitals did not lose by a big margin against Mumbai Indians. It was only on the last ball that they lost the game. So a big matchup today to watch out for. So now let's move on to the fantasy picks for today. So let's start off with mine first. So I'll just wait for the graphic. So yeah, we start off with wicketkeeper Richa Ghosh, and then the batting will be handled by Meg Lanning, Smriti Mandhana, and Meghna. We also have Shafali Verma in there. In the all-rounders, we have Ellis Perry, Marzan Kaap, Sophie Molyneux. Marzan Kaap is my captain, and Sophie Molyneux is my vice captain. And then in the bowlers, we have Renuka Singh Thakur and Shobna Asha. We also have Alice Capsey in the all-rounders. Also, if you do want to make any changes, I would recommend you add in Radha Yadav to the team. She had a very good outing last time, and we can say that the pitch will definitely suit her. So, Julie, what is your fantasy picks for today? I think quite similar to what we saw from you, Yazad, the wicketkeeper Richa Ghosh, followed by batters in Meglaning, Smriti, Meghna, Shefali, all-rounders in Perry, Kaap, Molini, and Capsey, and then bowlers Renuka Singh Thakur and S. Asha. So for me, captain will be Marizan Kaap, just because of the incredible form that she has been, and I'm hoping that she'll again be effective with the new ball inside the power play. And why I have her as the captain is because we know in any of the fantasy games that we play that the bowler who picks up wickets, I think, gets more than 20 points. And then if that player is your captain, that points goes on to double. So it is always good to have a bowler as your captain. I feel if that bowler is in good form, and then I'll have a safe option of Meglaning as my vice captain. Definitely. And yeah, there's the extra bonus point for the LBW and the bold point of view. So, as Marizan Cap's line and length, major wickets are either bold or LBW. So, that gives you the additional bonus too. Pratik, over to you for the fantasy picks. Yeah, so again, some common names and some surprises out there. I would go with Richa Ghosh as the wicket keeper, and then we've gotten Meg Lanning, Spriti Mandana, and I've included Jemima Rodriguez. It's just that, in the first game against Mumbai Indians, she was phenomenal. She came in at the death and did not take any time to settle, making sure that the pressure was put onto the opposition immediately. And previous time around, she was unbeaten at a 4 of 1. So she hasn't really had a big go at the bowler. So I'm hopeful that that happens today. And with the all-rounders, Alice Capsey, Elise Perry, and Madison Cap and Sophie Molyneux, all of these girls are multidimensional and they have proved their mettle in the previous outings as well. I'm very eager to see Alice Capsey today. The start she had gotten early on in this tournament was spectacular, which left the bowlers with no solutions at all. So she's one player I would look out for. And bowlers, I am backing Shriyanka Patil today. Yes, she has been expensive in all the games so far, but she's gotten the variations up her sleeves, and we've seen when she's played for India as well that she mixes it up well. So I'm hopeful for that to happen today. And then Asha has been phenomenal as discussed, and Radha Yadav again coming off a good outing in the previous game. So yeah, this would be my fantasy 11. So now let's take a look at the key players for today. So पहले आरसीबी की बात करते हैं because it's their home turf. So let's give them that advantage. So the first key player for today is Sophie Molyneux. Sophie Molyneux बतौर ऑलराउंडर एक तरह से कम बैक कर रही है वो टीम में कहा जा सकता है. काफी टाइम से ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी बाहर रही थी और इस सीजन अब तक उन्होंने 2 मैच में 4 विकेट लिए हैं और इकोनॉमी भी काफी डिसेंट है उनकी 7.62 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करती है
और इन केस देयर इज अ मिडिल ऑर्डर और अ टॉप ऑर्डर कोलैप्स, और आरसीबी काफी काबिल बल्लेबाज भी है और फील्डिंग भी बहुत ही बेहतरीन है, एज वी फाइंड इट वेरी कॉमन विद द न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर्स. दे आर ब्रिलियंट फील्डर्स एज वेल. So Julie, what will be Sophie Molyneux's impact on today's game? अच्छी शुरुआत सोफी मोलिनी ने करी है, हमने गेम से देखा है उनका योगदान क्या रहा है. पहले मैच में 1 विकेट और दूसरे मैच में 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे जब आरसीबी गुजरात जायंट्स के खिलाफ खेले थे. तो आई थिंक अच्छा इस्तेमाल उनका हो रहा है. स्मृति मानधना उनको अच्छे फेजेस में गेंदबाजी दे रही है मेरे ख्याल से, और जो उनको फील्ड चाहिए उस हिसाब से भी सोफी मोलिनी गेंदबाजी करते आ रही है, विच इज पेइंग रिच डिविडेंड्स आई फील. और वन ऑफ द आई थिंक गुड एस्पेक्ट्स अबाउट सोफी मोलिनी इज डिस्पाइट बीइंग अ कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनके पास जो आर्म बॉल है उनके आर्मरी के अंदर, वो देखने में काफी मजा आ रहा है. और वो पूरी तरीके से बल्लेबाजों को डिसीव कर रही है उनके आर्म बॉल से. तो बल्लेबाज को पता नहीं कि ये कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिन होने वाला है या अंदर आने वाली है ये गेंद, खासकर दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ. तो वो देखने में मुझे काफी मजा आ रहा है. और सोफी मोलिनी, जैसे कि हमने बात करी कि वो ऑस्ट्रेलियन टीम से बाहर रही है पिछले कुछ समय के लिए, बट हमें 2021 का अगर वो सीरीज याद हो, 3 साल पहले जब इंडिया ने टूर करा था ऑस्ट्रेलिया, सोफी मोलिनी के चेहरे पे पट्टियां लगी हुई थी, उनको इंजरी हुई थी, पर तो भी वो फील्ड पे उतरी, उन्होंने फील्डिंग करी, गेंदबाजी करी और अच्छा प्रदर्शन करा था. तो आई थिंक जस्ट लाइक एनी अदर ऑस्ट्रेलियन, शी इज दैट फाइटर विच यू ऑलवेज वांट टू हैव इन अ टीम. तो एक अच्छी प्लेयर है सोफी मोलिनी, और एक अच्छी शुरुआत के बाद मुझे लग रहा है एक अच्छा सीजन हो सकता है और आज भी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद हम उनसे कर सकते हैं. बिल्कुल. एक तरह से ब्रेव हार्ट कहा जा सकता है उन्हें कि शी पुट्स द नीड्स ऑफ द टीम बिफोर हर, irrespective of how injured, or if her team needs her in any situation, she'll be one of the first few players to put her hands up. So Pratik, your views on Sophie Molyneux? Well, Yazad, so from my standpoint, for me, it is about how Smriti Mandhana is, utilizing Sophie Molyneux in the middle there. She hasn't, bowled her 4 overs on the trot, but it has been mixed up extremely well. Like Julie pointed out, her arm balls, leave the batters extremely flummoxed because the release points remain the same, be it the conventional off spinner or the one that is coming in quickly, and batters do struggle to find out as to which way it is going to go. So that is the one thing that has played in her side, and also the fact that she would be up against a batting order that largely consists of right-handers at the top, starting off with Lanning, Shafali Verma, Alice Capsey, Jemima Rodriguez. So I really think that she could be utilized at the top of the innings, and given that she's been extremely good with her arm ball, so the arm ball and with the new ball would also aid her to get some drift, and she could also slow it up and turn the ball. So in retrospect, I think that would be a great challenge for the Delhi Capitals, and about how they negotiate is left with them. So I'm excited to see her today, and I'm hopeful that she's utilized at the right phases of the innings, making sure RCB get the best out of her. Yeah, so now let's take a look at the key players from the Delhi perspective. So our first key player from Delhi is Alice Capsey. एलिस कैप्सी काबिल बैटर है इंग्लैंड की, पार्ट टाइम बॉलिंग भी करती है और अपने अग्रेसिव गेम के लिए जानी जाती है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रूट पावर. नो, शी क्लियर्स द बाउंड्री एट विल. सो अब तक इस सीजन में उन्होंने 75 रन्स बनाए. एक ही पारी खेली थी जो थी टूर्नामेंट ओपनर में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, और उसी में 2 विकेट भी लिए थे उन्होंने. सो उनका काफी की रोल रहेगा आज व्हेन Delhi take on an informed team, that is RCB. So Julie, what are your views on Alice Capsey's role tonight? आई थिंक इस मैच के अंदर एलिस कैप्सी काफी फ्रेश माइंड से उतरेंगी, क्योंकि एक मिनी वेकेशन उनको मिल गया था सेकंड मैच में जब वो खेले थे. हालांकि फील्डिंग उन्होंने करी थी, पर ना बल्लेबाजी का मौका मिला ना गेंदबाजी का मौका मिला. तो आई थिंक वो छोटे से ब्रेक के बाद आज जब आरसीबी के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स खेलेगी, तो एलिस कैप्सी आई थिंक शी विल बी चार्ज्ड अप टू परफॉर्म. दोबारा नंबर 3 पे आएगी. पिछले मैच में हमने देखा कि जेमिमा रॉड्रिग्स को भेजा गया था, हालांकि केवल 1 ही रन चाहिए था दिल्ली कैपिटल्स को, पर आज मुझे नहीं लगता कुछ तब्दीली होगी. वो बैटिंग ऑर्डर के अंदर एलिस कैप्सी को ही हम देखेंगे नंबर 3 पे, और इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो टी20 क्रिकेट के अंदर. और शुरुआत उन्होंने अच्छी करी थी, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 75 रन जोड़े थे और 2 विकेट्स भी चटकाए थे. तो
अगर दिल्ली कैपिटल्स वो मैच जीत जाते तो वो श्योर शॉट प्लेयर ऑफ द मैच विनर हो सकते थे, पर वैसा हुआ नहीं। पर आज एक मौका है उनके पास, कैप्सी के पास। केवल 19 साल की ये खिलाड़ी है, इंग्लैंड से आती है, और बतौर ऑलराउंडर उनका प्रदर्शन आज अच्छा होने का आई थिंक एक्सपेक्टेशन दिल्ली कैपिटल्स से होगा, और वैसे ही कुछ होगा ऐसे मुझे लग रहा है। और एक तरह से कहा जाता है कि वो फील्ड पे जो मैच्योरिटी दिखाई जाती है, इट्स नॉट समथिंग ऑफ हर एज। यू वुडंट एक्सपेक्ट सच मैच्योरिटी बीइंग शोन बाय अ 19-year-old on the field. So that is what stands out for me. And Sorry, just to Pratik, just to add, I think she could open the bowling also for Delhi Capitals, given that Sophie Devine has had her troubles with off spin, so I think she could open it for Delhi today. I was just about to get to the point. It was as if you just read my mind right there. So Pratik, what would you like to tell us about Alice Capsey and her role tonight? Well, so she's one handy of a player in any team she plays. The fact that she can come at top of the innings and latch on to the bowlers by her will. We saw her the last time around. The way she got started, I think she was off with a flick shot that cleared the fence on the leg side, and then she just went about clearing the 30-yard circle and getting it over the fielders in some fashion, and the bowlers were left clueless. It's just that her approach is to get on with runs quickly and not waste time around too much. And I'm hopeful that she comes up with the same approach today as well. She's an extremely strong player both on the upper and bottom hand, which makes her to play to the merit of the ball and not premeditate a lot of situations. And with the ball, yes, she's been among the wickets, and I'm hopeful that she does challenge the RCB batters, given that a few of them do struggle with spin and also with left-handers in that batting lineup. Yeah. So sorry for the glitch. There was a temporary glitch there. So our next key player for today from the Delhi Capitals side is Meg Lanning. बतौर कैप्टन और ओपनिंग बैटर है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है टीम की। शी नॉट ओनली हैंडल्स हर ओन परफॉर्मेंस बट ऑल्सो द बैटर एट द अदर एंड मार्शल्स हर ट्रूप्स वेल। एंड जैसे हम हरमनप्रीत कौर के बारे में बात करते हैं, वो लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एज अ ट्रू कैप्टन, एक तरीके से कहा जा सकता है, बिकॉज she opens the batting for the side, gives them a good start on most occasions. So अब तक इस सीजन में उन्होंने 82 रन्स बनाए हैं और उनका हाईएस्ट स्कोर 51 है और 41 की एवरेज के साथ बैटिंग करती है। So Julie, what impact would Meg Lanning have on this outing today? मैगलैनिंग को मैंने मेरे फैंटेसी पिक्स के अंदर वाइस कैप्टन रखा है, तो पर्सनली आई एम होपिंग दैट ही इज गोना हैव अ गुड डे टुडे एज अ कैप्टन एंड एज अ बैटर एज वेल। और हमने उनके दोनों इनिंग्स जो देखे थे, पहला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ 31 रनों की पारी, अच्छी शुरुआत करी थी, और दूसरे मैच में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ एक अर्धशतक जड़ा था। हालांकि थोड़े से लकी रहे थे, थर्ड ओवर में वो जो कैच ड्रॉप हुआ था वृंदा दिनेश से, उसकी वजह से उनको जीवन दान मिला, बट शी कैपिटलाइज्ड ऑन द मिस्ड अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा स्कोर उनके बल्ले से हमने देखा। तो ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है मिगलैनिंग और शेफाली वर्मा की, आई थिंक दैट डिफाइंस सक्सेस ऑफ दिल्ली कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू मी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। मिगलैनिंग टॉप ऑफ द ऑर्डर ज्यादा रन स्कोर करेंगी तो दिल्ली कैपिटल्स के जो एंड ऑफ द 20 ओवर्स जो टोटल होगा उसके अंदर भी काफी अहम होता है उनका स्कोरिंग। तो एक अच्छी शुरुआत उन्होंने करी है, 82 रन बना चुकी है इस सीरीज के अंदर अभी तक, और आई थिंक शी इज लुक्ड कंफर्टेबल अगेंस्ट पेस एंड स्पिन। तो मुझे नहीं लगता आज ज़्यादा कुछ तकलीफें होंगी, और आई थिंक जस्ट अनदर डे एट ऑफिस फॉर मैगलैनिंग। तो दोबारा एक अच्छी पारी हम देख सकते हैं उनसे आज। And Pratik, what are your views on Meg Lanning today? Well, for me, Lanning, up until now, she's played as that matured captain, much like the role she plays for Australia. She gets off the innings slowly and makes sure to stay there. And if another batter is having a good day at the other end, she makes sure to, extend support and just make sure her presence is felt at the pitch for as long as possible. So, that sense of responsibility is there, and it is not something new for her. It's always the way she's played, and her intent is to stay up until the, say, 10th or 15th over, and then latch on to the bowlers when she knows that at the
depth. She has gotten finishers in her team to come and do it off. And apart from that, I also think that her captaincy plays an integral role in today's game. The way she utilizes the bowlers and sets the field would go on to become the defining statement in today's game. Definitely, not only Meg Lanning's batting, but her captaincy has played a crucial role in bringing Delhi the success that they have had. So now let's take a look at this match from a fan's perspective. So from RCB point of view first, so Sophie Devine का form थोड़ा परेशानी का विषय रहेगा from an RCB point of view. But as of now, group matches है, so it's not an issue even if you go on to lose a match. But going into the later half of the tournament and when the knockout matches approach, you would want one of your key players to be in form. Like we saw her performance last season. She was one of the best batters in the RCB lineup, and RCB has a plethora of batters. So, Julie, how much of a concern is Sophie Devine's form right now for RCB, considering the rest of the players are in good touch as of now, but as the knockouts approach towards the later half of the tournament, what do you think of Sophie Devine's form? नहीं मेरे ख्याल से आरसीबी ने जो 2 में से 2 मैचेस जीते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा कोई चर्चा नहीं कर रहा है सोफी डिवाइन के फॉर्म के ऊपर। अगर ये सिचुएशन उल्टा होता, एग्ज़ैक्टली उल्टा होता कि 2 मैचेस में दोनों मैचेस में अगर आरसीबी हारते, तो काफ़ी बातचीत होती सोफी डिवाइन के फॉर्म के ऊपर, क्या आरसीबी को एक नया ओपनर ढूँढना चाहिए। बट आई थिंक सिंस दे आर विनिंग, आई थिंक कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है डिवाइन के बारे में। पर आई थिंक पिछला मैच जो आरसीबी का हुआ था जीजी के खिलाफ, उन्होंने शुरुआत अच्छी करी थी, शी वॉज़ मिडलिंग द बॉल क्वाइट वेल। पर उसके बाद जो एशले गार्डनर ने उनका विकेट लिया, आई थिंक थोड़े अनलकी रहे। एनी अदर डे ऑफ द ईयर आई थिंक सोफी डिवाइन वाज डिस्पैचिंग दैट स्ट्रेट टू द स्टैंड्स। तो काफ़ी शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, पर आई थिंक शी जस्ट गॉट अनलकी टू फाइंड स्क्वायर लेग। तो आई थिंक ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा, सोफी डिवाइन पर्सनली भी ज़्यादा नहीं सोचेंगे उनके फॉर्म के बारे में। बट ऑब्वियसली अगर दिल्ली कैपिटल्स एलिस कैप्सी को उनके सामने लाएंगी, तो ऑब्वियसली द डीमंस विल हॉन्ट हर अगेन, कि दोनों बार उनको उनके जो ऑफ स्पिनर्स है ऑपोजिशन के, उन्होंने आउट करा था। पहले मैच में ग्रेस हैरिस हो, दूसरे मैच में एशले गार्डनर हो। तो इसीलिए आई थिंक किसी भी बैटर के लिए वो डीमंस चलते रहेंगे, ऑफ स्पिनर आएंगे तो वो आई थिंक थोड़ा कॉशियस अप्रोच जरूर लेंगी। बट आई थिंक ओवरऑल कुछ कंसर्न नहीं होगा। सोफी डिवाइन, इफ शी कंटिन्यूज टू प्ले her attacking natural brand of cricket, तो आई थिंक she'll be among runs today. So, Pratik, what are your views on Sophie Devine's form? Well, what I feel is Meg Lanning would definitely bring on an off spinner up early in the innings to exploit her weakness. And for me, more than her technical aspect of the game, it would be running on in her mind, because she's gotten out in the first two games also to off spinners. So that would be running on in her mind, and maybe she would be skeptical as well with her outlook, but I don't think that needs to be taken as a worry as such, because the team is doing good and all she has to prioritize is her form. Because as we go to the business end of the tournament, it is essential for her to gain form, as the expectations level go up there, the pressure is high, and given her experience at the international circuit, she would be an extremely key player. And talking about the technical aspect, the way she's gotten out a couple of times to off spinner in this tournament. Both of them happened while she attempted to play on the leg side, and somewhere I feel that she isn't extending her arms and letting the bat flow freely. The first time around when she went for the big slog sweep, somewhere I felt that her hands were cramped, and the full extension of the elbow wasn't there. And even the last time to Ashley Gardner, where she pulled it off, it was done half-heartedly, and it was also a soft dismissal. So she needs to, play with the full intention to send the ball out of the park, or just keep it grounded. Definitely. So now let's take a look at our other talking point now from a Delhi Capitals point of view. So Annabel Sutherland. Annabel Sutherland was one of the most anticipated players in the WPL from a Delhi standpoint, and ahead of this season in the auction, she was bought for a whopping 2 CR by the Delhi Capitals side, and she hasn't had the best of the season so far. From her point of view, she's not been
getting enough chances, either batting or bowling wise. Bowling wise, she's bowled her quota of overs in both the matches, but she's only been able to take that one wicket. And from batting, she's not got the chance to, show her batting prowess per se. But do you think the amount of contribution that Annabel Sutherland is making, is it justified? As in, is we definitely, all of us know that she's more capable than what she's contributing right now. But apart from Annabel Sutherland, do you think there could be a replacement in the side today? Julie, what are your views on Annabel Sutherland? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है फ़िलहाल। अगर हम देखें तो दिल्ली कैपिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन फॉर द सेम रीज़न कि पिछला मैच वो जीते थे, तो एक विनिंग मोमेंटम से ही उनको कैरी फॉरवर्ड करना होगा और प्लेइंग 11 आई थिंक सेम ही रखेंगे। और गिवन द फैक्ट कि द कैप्टन इज़ ऑल्सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एनाबेल सदरलैंड इज़ ऑल्सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज़ एनी बायस, बट ऑब्वियसली वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि शायद अपने जो टीममेट्स को वो अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगी, एंड आई एम श्योर कि मैगलैनिंग will be able to use her potential to the best of her abilities. और जैसे कि आपने यजाद बात करी थी वो 2 CR का जो प्राइस टैग है, तो आई थिंक किसी भी प्लेयर के लिए वो प्राइस टैग का प्रेशर ज़रूर होता है। तो आई थिंक थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे एनाबेल सदरलैंड को भी देना है कि शायद वो प्राइस टैग का प्रेशर वो ज़्यादा ले रही है। इफ़ शी फॉरगेट्स अबाउट द प्राइस एट विच शी वाज पिक्ड बाय द दिल्ली कैपिटल्स, तो आई थिंक वो थोड़ा और फ्रीली भी खेलेंगे, क्योंकि पिछले सीजन भी हमने देखा था WPL 2023 में देविका वैद्य के ऊपर भी वो काफ़ी प्रेशर था प्राइस टैग का, और हमने देखा WPL 2024 में वो है ही नहीं। तो आई थिंक अगर वो प्रेशर कोई भी प्लेयर हटा दे अपने दिमाग से, तो वो नेचुरली परफॉर्म कर पाएंगे। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज मिले नहीं है बैट के साथ, केवल एक ही इनिंग्स खेले और एक ही रन बनाए थे, नाबाद रहे थे उस मैच में, पहला ही मैच जो MI के खिलाफ हुआ था। उसके बाद बॉलिंग में उनको हालांकि अपॉर्चुनिटीज मिली है, 8 ओवर्स उन्होंने करे हैं, एक ही विकेट चटकाई है, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए जब भी वो खेलते हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम अपना स्पेल पूरा नहीं करते। शी इज़ मोर ऑफ अ 6th और 7th बॉलिंग ऑप्शन फॉर ऑस्ट्रेलिया। और उनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी अगर हम देखें रिसेंट टाइम्स में, मैं दोबारा वो साउथ अफ्रीका और इंडिया सीरीज ही कंपेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। तो जो 6 T20Is हुए थे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और इंडिया सीरीज जब हुआ था, तब 6 में से केवल एक ही बार एनाबेल सदरलैंड शी गॉट द चांस टू बैट, एंड दैट टाइम शी स्कोर्ड 12, इट वाज अगेंस्ट इंडिया। और बाकी पांचों बार उनको बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। तो आई थिंक थोड़ा वो इंटरनेशनल एक्सपोजर टुवर्ड्स T20 क्रिकेट कम रहा है। पर आई थिंक वो जो 2 CR का जो प्राइस है ना, आई थिंक उनका जो टेस्ट और ओडीआई का फॉर्म जो 2023 में उन्होंने दिखाया था, उसके बदौलत आई थिंक वो प्राइस टैग उनको मिला है। बट आई थिंक T20 में उनका रिसेंट रिकॉर्ड इतना खास नहीं है, बट स्टिल नथिंग इज लॉस्ट। केवल 2 ही मैचेस हुए, काफी बड़ा सीजन है, तो आई एम श्योर दैट शी विल बाउंस बैक। Definitely. So now let's take a look at our key matchups for today. Our first matchup is Shafali Verma against spin. We've number of times discussed her technique against spin, her प्रॉब्लम्स अगेंस्ट स्पिन। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने काफी अच्छी इनिंग्स खेली थी, बट वी आल्सो सॉ दैट शी गेव chances against the spinners which were occasionally dropped, did not carry to the fielder at occasions. So at some point we did feel that she's struggling against the spinners, but with Shafali Verma the run rate is always high, and the scoreboard is always ticking. It's either she hits out or gets out per se. So Pratik, what are your views on Shafali Verma and how she should be countering the spinners today? Because as we see today, there are quite a few quality spinners in the RCB lineup. There's Shobna Asha, Sophie Molyneux, and Georgia Wareham. So, what will be her game plan as to counter the spinners today? Well, there definitely lies a challenge for Shafali Verma out there in the beginning, but she's also coming out of a good knock. And as spectators or analysts, how much ever we may discuss about her weakness towards the spinners, she always finds a way out and comes out of it. I think at the core of her approach lies to manufacture shots that do not actually exist. Like I mentioned before, she is like the Virendra Sehwag in women's cricket. So she makes sure that the shots are generated. And I also think that there's a large possibility for RCB to try out spinners against her in the very beginning itself to exploit her weakness. And also that Sophie Molyneux and Asha have been doing extremely well. So I am hoping to see a spinner at the top there
to disrupt Shafali's flow. But from her point of view, there's nothing to worry as such. She's coming out of a great knock and just carry over the momentum to today. And yeah. जूली, आपका क्या कहना है इस मैचअप के बारे में, शफाली वर्मा अगेंस्ट स्पिनर्स? मेरे ख्याल से शेफाली एक ऐसी प्लेयर है जिसको बॉलर्स को डोमिनेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई थिंक वो करने के चक्कर में कभी-कभी वो जो रिस्की शॉट्स हम देखते हैं उनके बल्ले से वो आ जाते हैं बट अगर हम उनका नेचुरल गेम ऑब्वियसली चेंज नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे क्योंकि दैट इज़ व्हाट वर्क फॉर हर ओवर द ईयर्स अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो बट आई थिंक स्पिनर्स के खिलाफ अगर उनको भी पता है थोड़ा सा अगर वीकनेस है तो शायद थोड़ा कॉशियस अप्रोच अगर उन्होंने फॉलो किया और बाद में पेसर्स के खिलाफ कैपिटलाइज करा तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है क्योंकि आई थिंक जब भी आरसीबी गेंदबाजी करेंगे तो आई एम श्योर कि स्मृति मानधना जो खुद उनके साथ ओपनिंग करने आती है इंडिया के लिए एंड स्मृति मानधना हैज सीन शेफाली वर्मा आई थिंक फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉसिबल क्वार्टर्स तो उनको ऑब्वियसली उनके वीकनेसेस काफी पता होंगे तो स्मृति मानधना की कैप्टनशिप अगेंस्ट शेफाली वर्मा वो देखने में काफी मजा आएगा एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर श्रेयांका पाटिल गेट्स अ गो इन द फर्स्ट और द सेकंड ओवर ऑफ द मैच टुडे So let's take a look at our next matchup for today. That is Sophie Devine versus the Pacers. I know it is surprising that it comes from such a legendary player. You know, born and brought up in New Zealand. You might think she's accustomed to the moving new ball, but the stats suggest something else. Her average overall in the women's T20s is 32.41, but against the Pacers it drops to 23.55. It is not that big of a dip, unlike other matchups that we see, but it is definitely concerning from a RCB point of view because there is a informed Marisan Cup with the new ball, leading the Delhi attack. So, Julie, what are your views on today's matchup? आई थिंक हम जैसे वो हिंदी में कहते हैं ना इधर आई एम नॉट गेटिंग इट बट आई विल गेट इट आई थिंक आफ्टर सम टाइम कि आई थिंक बोथ द वे शी इज गोइंग टू फेस डेंजर टुडे अगर हम सोफी डिवाइन की बात करें एक तरफ आएंगी मारिजान का और दूसरी तरफ आई एम श्योर मैगलैनिंग विल गेट एन ऑफ स्पिनर तो आई थिंक कहाँ जाऊँ मैं ऐसे सिचुएशन में होंगी सोफी डिवाइन तो आई थिंक वो आज काफी इंटरेस्टिंग चैलेंज हो सकता है सोफी डिवाइन के लिए कि उनका अप्रोच कैसा होगा बट अगेन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा है डिवाइन के बारे में वो एक आक्रामक बल्लेबाज है अगर वो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर ही फोकस रखे और बिलीफ रखे तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ परेशानी होगी पर आज उनके सामने मारिजान काप अरुंधति रेड्डी जो अच्छे यॉर्कर्स भी कर रही है और शिखा पांडे तो ये ट्रायो होगा पेसर्स का उनके सामने तो अगर थोड़ा थोड़ा बच के खेले उनके खिलाफ तो एक अच्छी पारी हमें देखने मिलेगी बट ओवरऑल आई थिंक सोफी डिवाइन कुछ को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए आज I think the term you were looking for was आगे कुआ पीछे खाई. So, exactly perfect your Hindi is much better than mine so Pratik, what would you like to tell us about this matchup? Well, yeah, so like Julie mentioned, trouble is inevitable today for her, but it's only about how she's handled it. And over the years, we've seen what a champion of a player she is to come against the odds and get going. So it's only to start off with a positive outlook, when she's up against the Pacers, get a few cover drives going, pull the shot once and play to the merit of the ball and not think too much about the numbers or, what we are discussing now because as a player there it's a completely different atmosphere and it is only see ball and hit ball so I am hoping that we see the Sophie Divine we've seen over the years and hope that she's among the runs today. So now I would, like to entertain a fan comment today since we do have the time on hand. So this question is from Nandini Salaria. So the question that she's asked is, don't you think Nadine de Klerk can be a better asset for RCB than Georgia Wareham as she can bat better and Georgia isn't really effective on Indian surfaces? So I'd like to run a few stats about Nadine de Klerk before we answer this question. So she's played 48 women T20 as for South Africa, out of which she scored 439 runs at an average of 27.43. And she's also contributed with 37 wickets with best figures of 3 for 7. So, Julie, what are your views on Nadine de Klerk being a potential replacement for Georgia Wareham?
आई थिंक आने वाले मैचेस में हम शायद देख सकते हैं, अगर वर्कलोड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वैसे कुछ हो सकता है, बट अदरवाइज जो विनिंग कॉम्बिनेशन आरसीबी के लिए चलता आ रहा है, आई थिंक वो ज़्यादा चेंज करने की नहीं कोशिश करेंगे. एंड आई थिंक गिवन द फैक्ट दैट ऑल द मैचेस, आई मीन द फर्स्ट 11 मैचेस आर गोइंग टू बी प्लेड एट चिन्नास्वामी, और हमने देखा कि स्पिनर्स को कितना असिस्टेंस मिल रहा है. तो आई think Smriti Mandana is more comfortable having an extra spinner in the lineup in the form of Georgia Wareham, who's a regular in the Australian team, bowls good leg spinners. और नदीम डी क्लर्क ऑन दी अदर हैंड प्लेस फॉर साउथ अफ्रीका और एक मीडियम पेसर है. तो आई थिंक वो एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है दोनों प्लेयर्स के बीच. बट ऑफ कोर्स ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और हम जरूर नदीम डी क्लर्क को देखेंगे क्योंकि उनकी ऑलराउंड कैपेबिलिटीज के बारे में हमें कोई डाउट नहीं है. Bilkul. And right now, the leg spinners, as we've seen, have been contributing regularly, whether it be Asha Shobna for RCB. So, and apart from that, as we have discussed time and time again, all the batters seem to prefer pace on the ball. And with a medium pacer, the pace sometimes is always available to be used. So for now, RCB should stick to Georgia Wareham, I would say. Pratik, what are your views? Well, definitely that could be a prospect going ahead in the tournament. We don't really know how things would pan out, but for now, I think it is ideal for RCB to stick with the winning 11 because the way they've been gelling together as a unit is extremely good. And about Nadine D. Clerk coming in, the first 11 games happening in Chinnaswamy maybe would have given her the chance because later on, as we go into the Arun Jaitley Stadium, it is somewhere where the ball, grips onto the surface and assists the spinners largely. So it would be an interesting outlook as to how the RCB management would manage this because she's again an experienced contender and someone who can turn the game at the head of it. So yeah, interesting prospect and a very good question as well. So, quickly, let's get down to the predictions today. Julie, who do you think is emerging victorious today? I think it will be Delhi Capitals. I know RCB is going through a purple patch, 2-2 wins, but I think Delhi Capitals is a champion side, and I think losing to MI was a bit unlucky. वो मैच भी वो जीत पाते अगर वो आखिरी बॉल पे सजना वो छक्का नहीं लगाते तो आई थिंक आई एम रूटिंग ऑल्सो एंड होपिंग दैट डीसी विंस टुडे. और थोड़ा सा हमें कॉन्टेस्ट देखना है क्योंकि आरसीबी आई थिंक इट सीम्स कि वो दे हैव बीन ऑन अ रोल, तो एक बीच में अगर एक झटका मिले तो आई थिंक द tournament is again open, nice and wide. Definitely. So, Pratik, what would you like to predict today? Who do you think is winning? Well, definitely an RCB loss here would make everything interesting, but I am going to back the girls in red and gold. It's just that, they've been in form and they've swung the pendulum back into their side from the previous edition. And, with the middle order also getting some runs, I think they stand as a formidable opponents because they've gotten all ends covered. And I don't really see a reason for them to, have a trouble in today's game. Of course, we cannot predict as to what is going to happen, but looking at it from the previous two games, I am going to root for the Royal Challengers Bangalore. So, that is all for today's show, guys. And we'll see you all again tomorrow and discuss whether the East Sala Cup Namde continues or Delhi's Roar Macha takes over the Chinnaswamy Stadium tonight. Thank you, guys. Thank you for joining us.